ताल्लुक है, हम एक दुराहे पर खड़े हैं और हम सबको ये बात इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट. जो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट हैज गॉट टू चेंज in accordance with the aspirations and the prejudices of the people of Pakistan. सबसे पहले जो आइन बना वो 1955 के अंदर 1956 के अंदर फरवरी 1956 में 1956 का कानून बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया. उसके बाद 62 का कानून आया. उसके बाद 1973 के अंदर जो आज भी कानून, जो आइन राज है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने with the additional assistance of the opposition at that time unanimously पास किया. यूनानिमसली इसलिए हुआ कि ऑपोजिशन की भी नुमाइंदगी हुई और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हुई. अब बात आ जाती है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पर सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त है वो भी ये बात देख रही है. क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी है कि जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड. दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है, ये जुडिशियल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि इसमें लिखा क्या है. जो सारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर, जो कि लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि बाहर की भी डिमांड थी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कोड होना चाहिए. जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है. और अब जो ईस्टर्न यूरोप है, उनकी जो डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है. रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है. अब बात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट ऑल्सो. बेअंदाजा मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं. उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं और तमाम मुकदमात जो है सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट है वो सफर करता है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन विच अराइजेस टू द माइंड एंड विच इज द बेसिक क्वेश्चन वेदर इट विल बी destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitutional court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत वक्त, with due respect to the law minister, अगर हुकूमत वक्त ये पहला ड्राफ्ट, ये बात उन्होंने सही की, जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973, ये कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामान के पास नहीं आ सकता. पार्लियामान इज अ सुप्रीम बॉडी एज फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न्ड. मगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते ये इतना बड़ा, देखें 18वीं तरमीम भी आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह और मशवरा लिया गया था, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर, क्योंकि जुडिशरी के लोग ज्यादा नहीं थे, वो चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम क्या क्या इंग्लिश का बोलते हैं कि बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, वो 19वीं तरमीम आई और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो गई. अब बात सारी ये है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए. ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है? हु आर द पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इज देयर एनी चेंज इन इट? हु विल बी द पर्सन्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस
of the High Court and Federal Shariat Court and the Constitution Court. یہ کسی کو خبر نہیں ہے, اور میں لا منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی, آپ اپنے مسودے کو فائنل شیپ دے دیں, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان بار کاؤنسل ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں, ان کو آپ دیں. یا ایک ہم کو چاہیے, صدر صاحب کھڑے ہیں, ہم ایک صدر صاحب بیٹھے, ہم مل کر پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن are the stakeholders in the amendment of the constitution. They are the stakeholders. اس لیے ہمیں چاہیے ایک اچھا پروپوزل, ایک اچھی سوچ ضائع نہ ہو جائے in the shape of the information of constitutional court, جو کہ 2006 کے اندر جو چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف صاحب نے اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا تھا, اس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی 18ویں ترمیم کے اندر یہ کیوں نہیں آئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ وکلا کی اور عوام کی بہتری کے لیے ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیں, مگر اس کی کمپوزیشن اور اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کیا کہتے ہیں لا منسٹر صاحب سے, اور اپنے اسپیشلی نا سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے لیے. لا منسٹر صاحب تو حکومت کا حصہ ہے اس وقت, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں, مگر ان کا اپنا ایک رول ہے اس وقت. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں, یہ ہمیں اپنے وہ پروپوزل جو ڈرافٹ ہمیں دیں, ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن, ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, in the best interest of the judiciary, in the best interest of the independence of judiciary, we should formulate a constitutional court according to the wishes of the stakeholders, so that judiciaries کا بھی ان کو حصہ ہے, تاکہ فضول کے اندر چیلنج نہ ہو, کیونکہ اچھی چیز کو ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی آخری, بیفور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اپنا لا منسٹر صاحب اپنے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب سے کہ آپ ایک اسمال کمیٹی بنا دیں جو کہ انٹرسٹڈ ہو ان دا ڈرافٹنگ آف دی امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اور باقی لوگوں سے جتنے بھی بار ایسوسیشنز ہیں اور بار کاؤنسلز ہیں ملک کی, ان سے آپ تجویز لیتے ہیں, جیسے کھٹک صاحب تجویز دے رہے تھے, آپ ان سے رائٹنگ میں یہ منگوا لیں اور یہ بیٹھ کے ایک ایسا مسودہ تیار کریں جو قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے اچھا ہو. بہت بہت شکریہ.